Oh, dear students, in our last class we had discussed about cell cycle. We understood how the cell cycle is important for a life of a cell. Means we understood the multiplication of a cell is nothing but is called as growth. माने ग्रोथ माने कौन? ग्रोथ तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रो होची. आमे देखिले growth means what? It is nothing but the multiplication of cells only. So what is the multiplication of cells in higher living organisms? Is nothing but called as cell division. माने सेल गोटे थिबो दीटा हबो दुईटा रु चारिटा हबो ए सब को आमे ग्रोथ बोली कहूचे. द बॉडी द लिविंग बॉडी इज एक्चुअली ग्रोइंग in each cell division, and each cell division undergoes a cyclic pattern that is called as cell cycle. आमे पढ़िले से सब विषय रे वर्तमान आमे बुझिबा. We will try to understand what is cell division actually, that is basically called as mitosis. Meiosis madhya gote cell division, but meiosis is occurred only in the case of reproductive cells which are subjected to reproduction. माने गैमेट फॉर्मेशन केस रे ही हबो. तना हमें बुझिबा परे किंतु जनरली बॉडी रे एवरी सेल, नॉट ओनली आवर्स बॉडी बट आल्सो एवरी हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, जे हायर लिविंग ऑर्गेनिजम अछंती सेमानंकर बॉडी रे जेतेबेले भी ग्रोथ होउची, that is nothing but called as mitosis only. Now we will understand how the mitosis is actually happening with the cell. माने इक्वेशनल डिविजन और समविभाजन. ओडिया रे कहउचंदी समविभाजन, इंग्लिश रे इक्वेशनल डिविजन, और बायोलॉजिकल टर्म रे ताकू कहउचंदी माइटोसिस. माइटोसिस, माइटोस मीन्स थ्रेड. माने एठी सब क्रोमोसोम गुडाक जोड़ा कि थ्रेड पैटर्न रे थिबा. हमें पढ़िले क्रोमाटिन फाइबर्स. हमें सेल रे जतोले डिस्कशन हला, we had discussed in cell that chromatin fibers grouped together to form a complex structure called chromosome, and those chromosomes are in thread form जोड़ा कि गोटे x shape रो thread type रो देखा जीवो. तो से थ्रेड रो ही पार्टीशन हबो, तारो ही किछि कार्य हो, सेथि को माइटोसिस बोली कहउछन्ते. प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग identical daughter cells by replicating or dividing the chromosome. क्रोमोसोम को डिवाइड माने रेप्लिकेशन हबो बोले डबलिंग हबो, आउ क्रोमोसोम डिवाइड हबो. ओके, डिवाइड हबो माने डबल हबो तापर भाग हो जिवो. देखिबा हमें केमिति होउची ताको ही कहउछन माइटोसिस. माइटोसिस occurs in normal body cell. नॉर्मल बॉडी सेल माने the body cell of the माने normal cells of the organ. खाली दी प्रकार सेल रहे बेसिकली हमें जानिबा दरकार. सेमित तो बॉडी रे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, बट नॉर्मल बॉडी सेल्स आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड द रिप्रोडक्टिव सेल व्हिच आर सब्जेक्टेड फॉर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन पई जो माने प्रस्तुत थांदी. ओके, reproduction माने पढ़ले generally sexual reproduction in higher living organisms. So diploid somatic cell, actually somatic cell माने normal body cell जोड़ा कि diploid ही रहंती generally. Plant case रे normal body cell को somatic cell बोली कहंती, but animal case रे that is normally normal body cells only. So those are generally diploid, but haploid माने 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एठे गोटे जिंस ये करिबा, एटा वन सेट नहीं 1n और अनपेयर्ड क्रोमोसोम हला. एटा 2n माने वन सेट. एटा टिके रेक्टिफाई कर दबा, वन सेट
माने एटे टू सेट नहीं वन सेट माने देखो सी दिस आर द दिस इज वन सेट एंड पेयर्ड क्रोमोसोम टिके रेक्टिफाई करो एठी अनपेयर्ड क्रोमोसोम लिखि दियो एठी लेख पेयर्ड क्रोमोसोम ब्रैकेट लेख वन सेट एटे वन सेट टा काटी दियो एटे टू सेट टा काटी दियो एटे टिके रेक्टिफाई करो प्लीज सी एठे एटे कौन करिबा एठे काटी दियो वन सेट को लेख अनपेयर्ड क्रोमोसोम एठे टू सेट को काटी दियो लेख पेयर्ड क्रोमोसोम ब्रैकेट लेख वन सेट पेयर्ड हेगी थिले ताकू वन सेट बोली कहबा ठीक है प्रिंट मिस्टेक इज देयर सो नॉर्मल बॉडी सेल्स आर एक्चुअली व्हिच आर सोमैटिक सेल नॉर्मल बॉडी सेल्स आर डिप्लॉयड व्हिच आर 2n number of chromosome or one set of chromosome like this okay paired chromosome or a set of chromosome or diploid chromosome then reproductive cells are gametes or reproductive cells or these are called as sex cells these are generally haploid हाप्लॉइड हेतिले सिना बापार गोटे माने मेल रो गेमेट फीमेल गेमेट मिसिले डिप्लॉयड जाइगोट हबो जदि गेमेट्स आर डिप्लॉयड देन जाइगोट विल बी टेट्राप्लॉयड व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टेट्राप्लॉयड केबे हबनी जदि टेट्राप्लॉयड जाइगोट हे गला त हमर मध्य जाइगोट रो बॉडी सेल्स डिराइव हेछि यस और नो जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड सेल डिवीजन टू फॉर्म द टोटल बॉडी यस और नो सो if zygote have become tetraploid normal body cell will also become tetraploid the tetraploid हे गला हम diploid हवानी अर्थ हमरो जहा किछि कैरेक्टरिस्टिक्स बापारु अधा आसिला मारु अधा आसिला यस और नो माने क्रोमोसोम डा आसीछि जदि बापार कंप्लीट डिप्लॉयड मार कंप्लीट डिप्लॉयड आसी हम टेट्राप्लॉयड ही जिवा बोले कोन हबो बापार कंप्लीट कैरेक्टर मार कंप्लीट बापार कंप्लीट कैरेक्टर बापार गोटे मुंड मार गोटे मुंड हमर केतरा मुंड ही जिवो दीटा मुंड बापार दीटा हाथ मार दीटा हाथ आमर केतरा ही चारटा हाथ सेमती आम जो आउे बाप माँ हवा तो आमर छुआर सेमती कौन हम चारटा दीटा मुंड होता चारटा मुंड तापर आउे तार छुआर आठटा मुंड सो कैन यू इमेजिन भगवान हेले भाभी चिंती करचंती नेचर हैज डिजाइन्ड दिस साइंस वेरी केयरफुली एंड कॉन्शियसली देयर इज ए कांसेप्ट ऑफ मियोसिस इज देयर मियोसिस रे डिप्लॉयड टा हैप्लॉयड हबो only to avoid this problem नहले कौन हबो सबु समय रे in each generation characteristics will be double एमिदि हेकि रावण गोटेगा हेतिला कि गोटे कोटी कोटी रावण जन्म हेबे रावण बोले महारावण हे रावण रो 10टा मुंड थिला एट तो 50टा 60टा 100टा मुंड हबो तो if it is not only occurring with human but जदि ए प्रॉब्लम डा रहिबो बोले सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स डबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मु कौन कहली बुझी पारलो न बुझी पारछ आउ थे टिके सुनो बड़ इंटरेस्टिंग कथाडे कहली देयरफॉर मियोसिस इज इंपोर्टेंट एंड मियोसिस रे कौन होची डिप्लॉयड टा हैप्लॉयड रे कन्वर्ट होची आउ से हैप्लॉयड जगह कौन रिप्रोडक्टिव सेल बॉडी सेल्स आर नॉर्मली कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स व्हिच आर नॉर्मली डिप्लॉयड but sex cells which are reproductive cells these are haploid and these haploids are produced from meiosis we will see mitosis occurs only in the diploid in animal but mitosis occurs both in diploid and haploid in plants आमे पढिले गेमेटोफाइटिक फेज रे मध्य बॉडी रो ग्रोथ होची ना तो गेमेटोफाइटिक फेज इन प्लांट्स which we have discussed in algae in the case of bryophyta they are spending more time in gametophytic phase but again those are lower plants but again तांकर लाइफ मध्ये बहुत कम तथापि मध्य सेमानकर गेमेटोफाइटिक फेज रे बेसी सेल हैप्लॉइड अवस्था रे रहंती तो हैप्लॉइड सेल हेले मध्य तांकर बॉडी रो ग्रोथ हुए so in that case haploid cells undergoes mitosis also only in that case but rest of all other cases mitosis is generally occurring in the case of diploid but meiosis remember meiosis ro haploid ro ketala meiosis hobo never important make a note meiosis haploid never undergoes meiosis okay haploid ro kebe madhya meiosis hobo nahi okay so
but mitosis occurs both in diploid and haploid in plants. M phase जोटा कि mitosis phase, identical daughter cells are formed. Identical माने similar थिबो सितरे किछि आउ चेंजेस आसीवनी. Meiosis रे किंतु जेतेबेले gametes तयारी हबो सितरे कि चेंजेस आसीवो, that we will see. Identical माने similar समान टाइप रो सेल गुडा को ही तयारी हबो. Daughter chromosomes are exact replica माने duplicate copy, duplicate of parent chromosome. जो main cell डा थिबो one cell produce two cell after mitosis, yes or no? You have the common sense in your schooling. तमे स्कूल रे पढ़ी थिबो कि mitosis समविभाजन or equational division when it is happening one cell will produce two cell. तो जहाँ भी किछि क्रोमोसोम थिबो गुणसूत्र थिबो नॉर्मल सेल रो तो से केस रे माइटोसिस हेले सेम जो डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड दोज विल आल्सो बी द रेप्लिका और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल and chromosome will also be the same. Termed as equational division, this mitosis is also called as equational division, occurs only in eukaryotes. Eukaryote case रे ही हुए generally. मु कहली प्रोकार्योट केस रे से टिके सिमिलारिटी रखे जे कि बाइनरी फिजन सहित सेठी माइटोसिस प्रोकार्योट हुए नहीं बट प्रोकार्योट रो सेल डिवीजन को आमे बाइनरी फिजन टाइप रो बोली कहि परिबा. Look into the diagram. So mitosis, it has two phases. One is nuclear division occurs in karyokinesis and cytokinesis. Karyo means nucleus, kinesis means movement. So first nucleus bhitere prathame cell bhitere nucleus thibo. So prathame nucleus division ho, because nucleus is why important, because nucleus contain chromosomes and chromosomes are nothing but the complex form of gene. Remember, chromosomes are nothing but the complex form of gene, and this complex form of gene that is called as chromosome are found within nucleus. आमे पढ़िचे nucleus रे. So प्रथमे nucleus division हबो बोले nucleus टा double हबो. प्रथमे nucleus भाग हेगला ताकू कहला आमे karyokinesis, then cytokinesis माने it is cell membrane in cytoplasm. Cytoplasm means what? आमे पढ़िले cytoplasm रे cytosol थाए जेति सब fluids are there and all other organelles, cell organelles are also there. तो सीए मध्य डबल हबो तापरे भाग हबो. तो ए सबु साइटोकाइनेसिस माने प्रथमे कैरियोकाइनेसिस हला परे साइटोकाइनेसिस हबो परे. ओके, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस occurs, then cytokinesis occur. But karyokinesis is the most important step in mitosis, in cell division. Why? Because the chromosome is the most important because it contains gene, and gene is important because gene is responsible to maintain the characteristics features माने गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सब लक्षण आमे पढिचे हमर लक्षण कोन मोर मु गोटे मनीष मोर किछि पर्टिकुलर लक्षण अछि. You are also a human being, so you have also some particular characteristics. So every living organism have their own characteristics, features. So gene is important to maintain that characteristic feature. If gene will not be divided properly, यदि gene समान समान दी भाग रे भाग न हला बोले बहुत प्रॉब्लम ही जीवो. सेल रो प्रॉपर्टी ही लॉस ही जीवो, because gene is controlling total cellular activity. सेथि पई karyokinesis means what? The partition, the division or the separation of nuclear component माने nuclear division ताकू कहजन karyokinesis. एडा होची important step of cell division हला. तापरे माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एबे सेल साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन मीन साइटोप्लाज्म रे सेल ऑर्गेनेल्स अछि. धरिन सेल डिवाइड हला 10टा माइटोकॉन्ड्रिया अछि, गोटे सेल को 6टा माइटोकॉन्ड्रिया पळेला, गोटे सेल को 4टा पळेला, देयर विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम. धरिन राइबोसोम अछि 100टा राइबोसोम अछि, गोटे सेल को 40टा राइबोसोम पळेला, गोटे सेल को 60टा राइबोसोम पळेला, देयर विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम. बट 46 क्रोमोसोम अछि फॉर एग्जांपल मनीष भितरे अछि तो 46 क्रोमोसोम डबल हबो
डबल हम 46 प्लस 46 92 है जिते सी दीटा सेल को जीव डिवाइड हम ना सेल डिवीजन हम 46 एंड 46 इक्वली डिवाइड हबार अच्छी इक्वली इफ नॉट देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन द सेल द बिग प्रॉब्लम सेठी पई कैरियोकाइनेसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट step or stage of mitosis. See, these are the chromatin threads and they condensed माने complex form को आसीबे and form the chromosome. आमे पढिचे एडा सब chromosome विषय रे भी पढिचे आमे these are the sister chromatids of chromosome जोडा कि diploid chromosome ताकू आमे होमोलोगस क्रोमोसोम बोली कहबा तो एटा क्रोमोसोम ही ये भी गोटे क्रोमोसोम ये गोटे क्रोमोसोम जेतो सेपरेट ही जिवे किंतु पेयर्ड हे गला परे ताकू आमे गोटे डिप्लॉयड क्रोमोसोम बोली कहबा और डिप्लॉयड माने सेट ऑफ क्रोमोसोम बोली कहबा और गोटे गोटे सेतल क्रोमोसोम को इंडिविजुअल क्रोमोसोम न कहि कि ता कोन कहबा सिस्टर क्रोमाटिड बोली कहबा आर यू अंडरस्टैंडिंग बुझिला ना नहीं आउथरे सुनो म कोन कहली भला रे सुनो तो जते बेले सी इमिति पेयरिंग फॉर्म रे ही 46 क्रोमोसोम रहे माने 23 पेयर रहे 23 पेयर और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सो ईच पार्ट इज ए क्रोमोसोम तो एथरे दीटा क्रोमोसोम अछि किंतु व्हेन दे आर सेपरेटेड अमंग ईच अदर तो अलग ही जे सेतरो त हमें दीटा क्रोमोसोम बोली कहिबा बट व्हेन दीज टू क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड नाउ दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम और डिप्लॉयड क्रोमोसोम आउ तार ईच क्रोमोसोम को ताकू हमें क्रोमोसोम न कहि सिस्टर क्रोमाटिड बोली कहबा एंड द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द क्रोमोसोम इज नथिंग बट द सेंट्रोमियर एंड ऑन द सेंट्रोमियर इन द आउटर पार्ट ऑफ द सेंट्रोमियर काइनेटोकोर इज देयर काइनेटोकोर गोटे हुक लाइक स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन आवर न्यूक्लियस टॉपिक इन प्रीवियस चैप्टर सेल आमे क्रोमोसोम रे पढ़ला आडू पढ़ीचे आमे सेठे तो काइनेटोकोर रो काम कोन सेठे काइनेटोकोर रे काम कोन आमे देखिबा वी विल सी ओके नाउ कम टू कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट फेज इज प्रोफेज क्रोमाटिन थ्रेड्स कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम क्रोमाटिन जो थ्रेड गुडा थिला न्यूक्लियस भितरे से माने कंडेंस हो जिवे माने कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कि क्रोमोसोम फॉर्म को आसीबे एक्स शेप फॉर्म को आसीबे लुक हियर एक्स शेप फॉर्म को आसीले साइटोस्केलेटन वर्क एज माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स हमें पढ़ी जे साइटोस्केलेटन वी हैव स्टडीड इन सेल साइटोस्केलेटन्स आर ऑफ टू टाइप्स microfilament and microtubules are little larger and tubular structure and larger in size and diameter and microfilaments are thin thread like structures I'm padiche so those are nothing but the cytoskeleton तो साइटोस्केलेटन रो काम कोन एटा साइटोस्केलेटन गुडा को सब पार्टीशन हबो ना सेल रो पार्टीशन ले साइटोस्केलेटन रो गोटे मेजर रोल अछि हम बॉडी रो पार्टीशन हबो तो बॉडी भीतर स्केलेटल दा जे सपोर्ट करियोनी बॉडी ठीक रे पार्टीशन हे परिबो कि जे सेल भीतर रो स्केलेटन दा जे साइटोस्केलेटन now the nucleus will be divided then complete cell will be divided the cytoskeleton should cooperate or coordinate otherwise if cytoskeleton will degrade then how the cell will divide properly therefore there is an important role of a cytoskeleton and those cytoskeleton will be forming in the form of spindle fiber kintu जो सेंट्रियोल बोली गोटे अच्छी सी सेंट्रियोल गेट डुप्लिकेटेड एंड डबल सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनेल व्हिच विल डेवलप डिफरेंट माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर बोले तंतु गोटे इलास्टिक टाइप रो मटेरियल टा इलास्टिक और रबर टाइप रो मटेरियल को फाइबर बोली कहा जाए तो स्पिंडल माने गोटे पतला गोटे ये टाइप रो तंतु गोटे अठा भया लागि जीव जेमिति तो सी स्पिंडल फाइबर आर डेवलप्ड फ्रॉम टू ऑपोजिट पोल सेंट्रियोल टा डबल हे गला पर दीटा ऑपोजिट पोल को पळेबो देन फ्रॉम टू ऑपोजिट पोल दिस सेंट्रियोल प्रोड्यूसेस डिफरेंट स्पिंडल फाइबर्स माने इलास्टिक थ्रेड गुडा को सब डेवलप करिवो ओके सेंट्रियोल माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल
डबल हेगला पर ऑपोजिट पोल को माइग्रेट कला एंड फॉर्म ए ब्रिज ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स कॉल्ड स्पिंडल फाइबर अंडरलाइन दिस माइक्रोट्यूबुल एंड स्पिंडल फाइबर माने माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट्स आर नथिंग बट द स्केलेटल स्ट्रक्चर विल इलास्टिसिटी आम स्केलेटन रो इलास्टिसिटी अछि यस आम स्केलेटन रो इलास्टिसिटी अछि जे रबर भले इलास्टिक नाही आवर स्केलेटन्स आर नॉट रिजिड लाइक वुड काठ भलिया रिजिड नाही देखो सुखिला काठ केते रिजिड थाउची पवन हेले भांगी जीवो किंतु कंचा काठ फ्लेक्सिबल थाउची सेमिति आमर हाड़टा जो हाड़टा सुखी गला गोटे मला गोटे गोटे डेड बॉडी को जाता हाड़टा जो ये सुखी जाइथियो ताकू टिके मोड़ले भांगी जीवो किंतु आम बॉडी जेहेतु दिस skeleton is there and within that skeleton there are some this skeleton is also under activity a skeletal cell guda ko dead cell guda no doubt but these are supported by some living cells ए भितर किछि बोन मेरो अछि किछिटा लिविंग पार्टिकल्स अछि आ ऊपर दे कि नर्व्स गुडा को जाईछि मसल्स अछि सो ऑल दीज आर मेकिंग द स्केलेटन एक्टिव ओके सिमिति द स्केलेटन रिलैक्स ये कंप्लीट रिजिड नाही कि कंप्लीट फ्लेक्सिबल नाही बट कंपेयर्ड टू द डेड पार्टिकल दिस skeleton is having some flexibility because of this flexibility of the skeleton we can move any place anywhere any shape we can produce we can make any shape out of this body yes or no simiti skeleton thiba jogu cell ro madhya jetole jiu type ro टिके shape size madhya टिके flexibility रहिबो जदि सेल टा रिजिड हे रहिला कोनोसी मध्ये एक्सटर्नल प्रेशर पड़िला माने सेल विल बिकम डैमेज हे जिवो किंतु इन होउनी इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट तो से कौन हो तो ये जो ब्रिज टाइप माइक्रोट्यूबुल्स गुड़ाक सब डेभलप हम जोटा कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर गुड़ाक डेभलप होगी गोटे ब्रिज टाइप फॉर्म कर ओवर द सेंट्रोमियर द हुक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड कॉल्ड एज काइनेटोकोर आई टोल्ड यू सेंट्रोमियर ये जो सेंट्रोमियर रहा ता दी पट दी साइड रे काइनेटोकोर अच्छी आम पढ़ीचे आगुरी The chromosome attached to the spindle fiber by kinetochore. देखो look into the diagram here now. Look into this diagram. आबुतरे मु देखौची. See this is the chromosome. This is the diploid chromosome. This is one sister chromatid. This is another sister chromatid. Now the connective link between two sister chromatid or chromosome. Okay, unpaired chromosome. देतलो connection मिसी गला से paired chromosome हे गला. The now in paired chromosome, the unpaired chromosomes are called as sister chromatid. मु कहली आउथे. So now the connective link between these two sister chromatid is called as centromere, and outer to the centromere the kinetochore are found. Okay, kinetochore. What is this kinetochore? Kinetochore are nothing but the hook-like structure. Hook भलिया हेकी थिबो, so that the spindle fiber when it is arised जेतबले से सेंट्रियोल रु spindle fiber बाहरिबो गोटे माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर the spindle fiber when it is developed from the centriole it will attach to the chromosome but in which position in kinetochore position kinetochore रे गोटे हुक भलिया हेकी थिले से गोटे दौटा आसी हुक टार लागिबो ना नै yes or no can you imagine the thing I will show you the animation so एइठे गोटे स्पिंडल फाइबर लागिला एपड़ा गोटे स्पिंडल फाइबर लागिला ओके काइनेटोकोर लागिवो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हेले ए सबु हेला को न्यूक्लियस टा ब्रेक डाउन हेले सिना जाई लागिवो न्यूक्लियस टा ब्रेक डाउन हि नथिवो ता हाउ द सेंट्रियोल विल माने सेंट्रियोल अराइजेस spindle fibers and spindle fiber attached to the chromosome if nucleus does not disappear nucleus disappear हेइनी बोले केमिति लागियो जाय कि so the nuclear membrane has to be disappeared से disappear हेबा दरकार nuclear membrane एतो disappear हे जिवो okay now nucleus open हे गला now the spindle fiber from centriole come and attach to the kinetochore of each chromosome. This phase is called as prometaphase. एटा को prometaphase बोली कहउचंती जोडा कि प्रोफेज रो एंडिंग को रहउची प्रोमेटाफेज तापर कोन आसीओ मेटाफेज आसीओ
अब ए प्लेट को कौन कहबा हमें मेटाफेज प्लेट नाउ मेटाफेज कम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर पिले biology is not the mathematics and mathematics is not the biology you just remember मु पचारिबी तमर तमे चाइल्डहुड रु टीनेज को एंट्री कल नाउ यू आर इन टीनेज नाउ आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल एंटर इनटू यंग एज फ्रॉम टीनेज मु जदि तुम पचारिबी इन व्हिच मिनट इन व्हिच सेकंड योर टीनेज you left teenage and you entered into young age. Can you tell me exactly? mu jodi pacharibi in which second or in which minute or in which body condition you left childhood and you entered into teenage, can you reply me perfectly? No. Nobody, no one can answer this type of question because biology is not the mathematics. Biology is such a living science, गोटे practical science जोड़ा कि रोक ठोक भावरे आमे ताकू इमेजिन करि परिबा नाही जिमिति कि practical science रे गोटे दिनटा को समय रे सरुची आ को समय रे राति रे कन्वर्ट होची आ गोटे रातिटा को टाइम रे को मोमेंट रे सरुची आ दिन रे कन्वर्ट होची कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन द एग्जैक्ट सेकंड व्हेन द नाइट is actually converted into day? Can we answer? No one can answer. So this is a practical science. Therefore तावली मु mathematics को underestimate करूनी. Mathematics is also a very supreme science, but realize the practicality and the living pattern of biology. सेथि पई आमे जेते बेले कहबा कि गोटे गोटे फेज एक्जाक्टली कोडे सरुची कोडे आरंभ होची बोले इट इज नॉट लाइक दैट. प्रो फेज सरिला धीरे धीरे मेटा फेज चलला तापरे आमे जस्ट गोटे इमेजिन करी करी जियो पड़िबो. सेथि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हला. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एक्जाक्टली धड़कना हे गला तापरे धड़कना जे इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट. बुझा पड़छ ना नहीं. हेति न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर हबो ताको आमे प्रो मेटाफेज विल कहले. जेतले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दा धीरे धीरे डिसअपियर हला सेते बेले सेंट्रियोल रू स्पिंडल फाइबर डेवलप हे कि धीरे धीरे आसी कि से काइनेटोकोर सहित लागिला. जेतले कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर दैट phase or that stage of cell is actually called as metaphase. Chromosome assembled at the equator or metaphase plate. माने क्रोमोजोम गुड़ाक सबू जिमती इक्वेटर माने कौन पृथ्वी रो इक्वेटर प्लेन माने कौन पिले जोड़ा कि विषुव रेखा बोली कहउचंती ओडिया रे माने इक्वेटोरियल प्लेट माने कौन जोड़ा कि टोटल पृथ्वीटा को सम्मान दी भाग रे भाग करछि गोटे मझी गारडा. यस और नो सिमिति इमेजिन द सेल एज ए ग्लोब. इमेजिन कर सेल टा गोटे ग्लोबल शेप रो फॉर एग्जांपल तार समान मझी जगटा रे जते बेले क्रोमोसोम गुडा को सब अरेंज हे जिवे ताको हम कोन कहबे इक्वेटोरियल प्लेट बोली कहबा. एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेस. अंडरलाइन दिस वर्ड अंडरलाइन. देन कम टू एनाफेज. ओके एठी गोटे जिंस देखिबा देखो एडा होची इक्वेटोरियल प्लेट हला. एठी अनपेयर ए पेयर्ड हे छि हम अनपेयर्ड कर देले किंतु देखो ए डायग्राम टाको देखो एडा एक्चुअली माने प्रोफेज और मेटाफेज बोथ रो डायग्राम दा एडा. तापर ए डायग्राम दा हे जाउची एक्चुअली एनाफेज रो डायग्राम दा. एक्चुअली प्रोफेज रो डायग्राम होची एडा. ओके एडा होची प्रोफेज रो डायग्राम. एडा होची प्रो मेटाफेज और एनाफेज मेटाफेज. दिस डायग्राम इज फॉर प्रो मेटाफेज and metaphase and this diagram is for anaphase. एटा anaphase रो diagram. See
the sister chromatid become free. वर्तमान sister chromatid फ्री हेबे कोठे एनाफेज रे केमिति फ्री हेबे हाउ से माने जो काइनेटो सेंट्रोमियर सहित सेंट्रोमियर रे दीटा सिस्टर क्रोमाटिड लागी पेयर हेगी क्रोमोसोम फॉर्म रे थिले ओके नाउ दिस इज वन सिस्टर क्रोमाटिड दिस इज अनदर सिस्टर क्रोमाटिड नाउ दिस द कनेक्टिव लिंक इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर जोडे कि एठे गोटे काइनेटोकोर लागिची हियर अनदर काइनेटोकोर इज देयर ओके सो नाउ जेतेबेले काइनेटोकोर सहित स्पिंडल फाइबर लागी गला द फ्री क्रोमाटिड आर पुल्ड बाय काइनेटोकोर टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ओके द सेल इलोंगेट्स ड्यू टू नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आमे पढिले एठे जेतेबेले स्पिंडल फाइबर गुडाक व्हेन स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर दैट स्पिंडल फाइबर जार कि बिकॉज ऑफ द elasticity of the spindle fiber it pull towards the opposite pole ये यारे टाणिबो यारे टाणिबो so that the connective link between two sister chromatid breaks down and it is separated among each other okay तो कौन हला free sister chromatid are pulled by kinetochore towards opposite pole देखो एटा होची स्पिंडल फाइबर जे कि काइनेटोकोर सहित लागिला बट दीज स्पिंडल फाइबर आर अराइज्ड फ्रॉम वन सेंट्रियोल एंड अटैच्ड टू अनदर सेंट्रियोल ए मझिरे कोनोसी क्रोमोसोम सहित इट इज नॉट अटैच्ड एंड इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी काइनेटोकोर or any chromosome therefore these spindle fibers are called as non-kinetochore spindle fiber like this look into this spindle fiber is also non-kinetochore spindle fiber because it is not attached to any kinetochore but these spindle fibers are attached to kinetochore and are responsible to separate the sister chromatids among each other and attract the sister chromatid towards two opposite pole therefore these are called as kinetochore spindle fiber what is spindle fiber see because of kinetochore spindle fiber the sister chromatids get separated to opposite pole we studied we understood because of a non-kinetochore spindle fiber the cell elongation takes place underline this word important we understood what is the role of kinetochore spindle fiber but we have to understood there is an important role of non-kinetochore spindle fiber also जदि से माने ऑपोजिट पोल को जाउचंती पिले आमे देखिबा एनिमेशन रे जेतो सेल डा गोटे ग्लोबल शेप हे कि अछि किंतु जेतेबेले सेल डिवीजन हब अर्थ गोटे सेल भितरे दीटा न्यूक्लियस रहिबे तो सेलटा टिके इलोंगेट हेबार अछि ना सेथि पई कोन करिवो सेलटा जे ग्लोबल हे कि थिवो सेपरेट ही परिवोनी सेलटा टिके ओवल शेप को आसीबार अछि टिके सिलिंड्रिकल हेबार अछि दीटा ऑपोजिट पोल रे दीटा न्यूक्लियस हबा को जाउची तापर दीटा न्यूक्लियस को सराउंड हे कि दीटा सेल तयारी हबो तो द सेल हैज टू बी इलोंगेटेड लिटिल बिट से इलोंगेशन रे किए हेल्प करिवो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर द नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एक्चुअली इलोंगेट द सेल टुवर्ड्स टू ऑपोजिट पोल दी पार्ट रे इलोंगेट करिए बिकॉज से माने जेहेतु आउ कोन से स्पिंडल फाइबर को काइनेटोकोर को धरि नथिबे सेथि से मानकर इलास्टिसिटी बहुत बड़ी जीवो okay because of this thing the cell become elongated okay so now then come to telophage see this is the diagram of telophage nuclear envelope redevelops now the sister chromatids whatever the sister chromatids are there they become unpaired and separated to opposite pole and after the two sister chromatids are separated to two opposite pole then in two opposite pole the nucleus or nuclear membrane redevelop outre tiyari hichibo hala why to protect the chromosomal content the spindle
डिसेम्बल्स माने जो असेंबल हेगिरी थिले डिसअसेंबल हे जिवे स्पिंडल गुडाकर काम हो गला स्पिंडल फाइबर रो काम सेमानंगर काम कोन दे आर प्रोड्यूस दे आर डेवलप्ड ओनली टू सेपरेट the sister chromatids. Now they have already separated. Now there is no work of spindle fiber. Now they are disassembled. माने आउथरे सेंट्रियोल रे जाई कि से माने मर्ज हे जे मिसी जीवे सेठे क्रोमोसोम्स डिसअसेंबल्स क्रोमोसोम गुडा जो असेंबल हे कि थिले से माने सब डिसअसेंबल हे जे माने सब क्रोमाटिड फाइबर रे कन्वर्ट हे जिवे क्रोमाटिन फाइबर थिला ना असेंबल हे कि से माने क्रोमोसोम फॉर्म को आसिले ना प्रोफेज रे हमें देखिले आउ थरे से मानर काम सरी गला द डिवीजन द न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स नाउ इट इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस द क्रोमोसोम बिकम अगेन डिसअसेंबल माने आउ थरे स्कैटर्ड हे जिवे The actin filament form cleavage at the center of cell. Cell ro center रे actin filament माने again microfilaments. है cytoskeleton. Cytoskeleton कौन करिवो actin filament जोरे कि microfilaments रहे से गोटे क्लीवेज तैयारी करिवो क्लीवेज तैयारी हेकी जिन गोटे बेलून डे थियो मझी रे आमे गोटे चिपी तो प्रेस करिकि गोटे क्लीवेज तैयारी करी आउथरे बेलून डाकू दी भाग रे भाग कर दबा इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल तो क्लीवेज फॉर्म हम क्लीवेज माने से दोन बेलूनडा अच्छी बेलूनडार मझीरे आम प्रेस करी नबा प्रेस करी नहीं कि ताकू दी भाग कर परिबा ना ये सर नछि छिंडे दे परिबा सिमी जोडे क्लीवेज टे इंटरनली सेलुलर आमी सिना एक्सटर्नली देले से इंटरनली सेल मेम्ब्रेन रु ही डेवलप हो इंटरनली ही एक्टिन फिलामेंट बेलूनडार बेलून भलिया रे जिमि थाए सिन सेलडा थिबो ताकू इंटरनली ये करिकि ताकू सेपरेट करबो The condensed chromosomes disassociate and again form thread-like chromatin. कहली जो क्रोमोसोम गुडा कंडेंस हेकी थिबे से माने डिसएसोसिएट हे जिवे डिसअसेंबल हे जिवे तापर क्रोमाटिन फाइबर रे कन्वर्ट हे जिवे in each nucleus after anaphase when the sister chromatids are pulled to opposite pole पढिला हमें sister chromatid गुडा को दीटा opposite pole को गला परे they are now called as daughter chromosome important word when the sister chromatids are separated among each other now they are not called as sister chromatid केतेबेले सिस्टर क्रोमाटिड बोली कुहा जीवो जेतेबेले से माने गोटे क्रोमोसोम डिप्लॉयड क्रोमोसोम रे दीटा पार्ट हेकी थिबे अटैच हेकी थिबे सेतेबेले ही देन ओनली द ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सिस्टर क्रोमाटिड but when they are separated among each other and they are transferred to two opposite pole and surrounded by two different nucleus now they are not called as sister chromatid they are called as daughter chromosome understood the difference between sister chromatid and daughter chromosome ताको आमे हाप्लॉइड कहि परिबा कि नो नॉट हाप्लॉइड कारण ये एग्जिस्ट करिवो निमिति हेकी अनपेयर्ड फॉर्म रे से आउथरे पेयर्ड हे जिवो हबो देखिबा आमे जतला एस फेज को आसीबो एमिति हेकी से दीटा सेल हे गला है तापर आउथरे जते बेले से आसीबो कोठी की G1 फेज आउथरे एस फेज को आसले डीएनए डबलिंग होची ना नहीं तो दीज आर नथिंग बट डीएनए ओनली से डबल हेकी से पेयर हे जिवो आउथरे तो से एग्जिस्ट करला कि हाप्लॉइड फॉर्म रे हाप्लॉइड फॉर्म माने से परमानेंटली हाप्लॉइड हे गरे जिवो okay but this is not permanently haploid chromatins are together in a chromosome each called as a sister chromatid but chromatids are separated each called as daughter chromosome important now chromatids are together okay we understood this one then come to furo formation ए जो furo formation होची ये अलग सेल रोचे क्लीवेज फॉर्मेशन होची फ्यूरो फॉर्मेशन मध्य हबो कोठे एनिमल सेल गुडा करे हला जो क्लीवेज फॉर्मेशन हला से क्लीवेज टा कोडे माने क्लीवेज डेवलप हला देखो हियर क्लीवेज आर डेवलप्ड बट क्लीवेज डेवलप हे कि से कंप्लीट सेल टा को दिभाग कर दवा ना नाउ द सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म गेट सेपरेटेड व्हेन कोडे हबो एटा साइटोकाइनेसिस रे हबो let us see cytoplasm of parent cell divided into
डॉटर सेल्स सेटा को ही साइटोकाइनेसिस कहउछंदी माने टोटल जो एठी थिला क्लीवेज डेवलप हेतिला से ओडे फ्यूरो माने टोटल ओडे दी पट जाको फोर्स आसी दी भाग हे जिवो बेलुनडा जिन दी पट जाको फोर्स आसी दी भाग हे गला से टाइप रो हबो and that is called as furo formation and this is happening in the case of animal cell रो साइटोकाइनेसिस रे फ्यूरो फॉर्मेशन हबो जोडा कि ओडे रिंग फॉर्म रे आसी की टोटल सेल टाको दी भाग करतबो बट इन द केस ऑफ प्लांट केस रे सेल प्लेट फॉर्मेशन हबो मींस व्हाट जेतबेले क्लीवेज आसीबो दी पट आडगो सेल प्लेट किमिदी दी पट आडू प्लेट टाइप रा आसी की पूरा ए करियो फ्यूरो फॉर्मेशन कोन सर्कुलर मोशन रे चारि पट आडगो आसीबो पूरा सर्कुलर मोशन रे आसी की प्रेशर हे की दी सेल टाको दिभाग कर दबो कट सेल प्लेट फॉर्मेशन कोन दीटा बाई डायरेक्शनली दीटा डायरेक्शन रे आसीओ प्लेट भलिया आसी की सेल को दिभाग कर दबो Are you understanding? Furo formation of plate formation re kimdi hochi. So cell plate formation occurs in the case of plant, but furo formation occurs in the case of animal cell. Because plant cells have a cell wall, plant cell ro cell wall अछि cell wall टा टिके rigid सेथि पई सबु पूरा सर्कुलर मोशन रे जिमिति की ग्लोब रो थाए चारि पटा आडू को आसी की फ्यूरो भलिया रे ताकू सेपरेट करि परिबो नाही सेल को प्लेट फॉर्मेशन हे कि थाए माने सेल वॉल टा जेतु रिजिड थाए बिकॉज द सेल वॉल इज रिजिड नाउ द प्लेट फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शन ए स्ट्रेट प्लेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्लेट आसीबनी एक्टिन फिलामेंट गुडा को ही इंटरनली गोटे प्लेट फॉर्म भलिया करी कि ताकू दीटा सेल रे पार्ट भाग कर देबे ओके and actin will not be able to divide the cell membrane and the cytoplasm so cell plate is formed तो cell plate टा कार इन्फ्लुएंस रे तयारी हुए सेल वॉल रे इन्फ्लुएंस रे तयारी हुए सेल वॉल आउथर प्रेशर दबो सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन आउथर प्रेशर दबो एक्टिन फिलामेंट गुडा को साइटोस्केलेटन को इन हे की साइटोप्लाज्म सेपरेट हे जिवो so this is what is called as cytokinesis and now you see two different cells are produced here. So these are the see cell plate formation means पूरा bidirectionally आसिला दी पटाडू आसिला फ्यूरो रे आमे देखुथिले सर्कुलरली देखो फ्यूरो रे किमि होची पूरा रिंग फॉर्म रे सर्कुलरली देखो सर्कुलरली पूरा रिंग फॉर्म रे तंटी चिपिला होया रे तंटीटा किन चिपाजे पूरा चारि पटाडू चिपिकी ताकू दी पार्ट हे गला सेमिति फ्यूरो होची तंटी चिपिला होया रे ओके सर्कुलरली रिंग फॉर्म रे बट सेल प्लेट टा किमि होची जिमिति की चाकुरे काटला भलिया रे चाकुरे दीपटाडू दी कइची सीजर किमिति करा होची सीजर रे एमिति होची सीजर दीपटाडू प्लेट होची तडा द प्लेट फॉर्मेशन रा कार इन्फ्लुएंस रे होची सेल वॉल रे इन्फ्लुएंस रे and cell wall influence pressure on cell membrane and cell membrane pressurize on the actin filament cytoskeleton and ultimately the plant cell get divided. Restricted mostly to diploid in animal and diploid and haploid in plant. हम पढ़िले माइटोसिस ता मोस्टली डिप्लॉयड रही हो एनिमल रो डिप्लॉयड रही थाए आ प्लांट केस रे हैप्लॉयड मध्य रहे गैमेटोफाइटिक फेज रे नॉर्मल सेल सेथिमी से केस रे डिप्लॉयड हैप्लॉयड in the case of plant and only diploid in the case of animal mitosis habo then cell growth cell ro growth hochi mane body ro growth hochi that is also happening in the case of mitosis hele hi cell ro growth habo cell repair cell kichi repair hawar achi बोले सेरा माइटोसिस केस रे ही हबो कारण नॉर्मल बॉडी सेल रो माइटोसिस ही होची मियोसिस तो हो ही नाही ओके सेति माइटोसिस रो सेटा होची सिग्निफिकेंस देन रिजेनरेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स आमर बॉडी रे पूरा डैमेज हो जाईची आमर हो कि एनी प्लांट्स रो हो पूरा डैमेज हो जाईची से रिपेयर हो जीवो बोले इन दैट केस आल्सो माइटोसिस अकर्स देन साइटोकाइनेसिस हमें देखिले सेल ऑर्गेनेल्स लाइक mitochondria chloroplast ribosome all these cell organelles are distributed in two cell but not equal quantity habani but chromosome has to be equally separated but these cell organelles is not equally separated किछिटा आग पछ हे गेले किछि असुविधा नाही naturally. Now meiosis comes, it is an again important topic.
मियोसिस पढ़ा आम आउ दीटा क्लास रे हार्डली दीटा कि 3टा क्लास रे चैप्टरटा सरजिव इट्स ए स्मॉल चैप्टर then we will start biomolecules. So we will discuss this meiosis in our next class, but next class I will show you a animation of this mitosis, then I will start meiosis. So I hope you understood whatever I have discussed today. Listen to my class repeatedly and go through the notes so that you can understand the topics perfectly. Thank you very much.